between mind and body studied under psychophysiology. But somewhere we have forgotten that a healthy life demands a constructive arena, an arena where our minds are readily able to deal with stipulations. The fact that a healthy life is impossible without a healthy mind should be ever reckoned. But here comes the big question mark. What is a healthy mind? It is not the absence of struggle. It is the presence of balance. It is the ability to breathe even when the world feels heavy. It is the ability to find tranquility not just in silence but amidst chaos. It is the ability to smile. Smile not because life is perfect but because we are resolute enough to live it. Teenagers are the hardest hit of mental unhingedness. Mental instability doesn't always mean exposure to a mental disorder, but it also means not having mental peace. Teenagers suffer consequence of not being in their conscious state of mind, which is reflected in their unproductive lifestyles, their persistent health issues, a testament that there exists a correlation between mind, stressors, and lifestyle. Let me say this. Mindfulness is a virtue which can be imbibed through positive environments, through empathetic social and mutual connections, the ability to facilitate emotional unburdening, and the ability, most importantly, the ability to not distort the reality but to live it, to live the reality. So here I am, standing before each one of you, not just to speak, but to plead, to take care of the only thing that controls everything, your mind. Remember, a healthy mind is not just a part of life, it is the heart of life. For Dinoma, concealing everything while reciting a slok. Yad bhavo tad bhavati. What you think is what will happen. Corroborating to the everlasting impact of mental cohesiveness on the discourse of life. Thank you, everyone. Thank you, Pankhuri. Now, can we have Aryan Kumar from Delhi Public School, CHAS, Bokaro? A healthy mind is a garden sphere that deals with peace and self-care. With all the thoughts like seeds, good and wise, it reaches upward to the skies. Good afternoon and greetings to the house. I am Aryan Kumar of Delhi Public School, CHAS. Let me start this declamation with a simple question. Have you ever felt tired? Not in your body, but in your mind. You wake up and everything feels heavy. You smile on the outside, but inside you're struggling. You are not alone. Many of us feel that way, and that's why today I want to remind you that true health isn't about six-pack abs or a salad. It's about a healthy mind. Let me start this declamation also with a story. A story not about a person, but an elephant. This story I heard when I was 7 years old. You see, when elephants are babies, they're tied with a rope they can't break. They try and they fail. Eventually, they stop trying. But when they grow old or strong enough to break the rope, they still don't. Why? Any guesses? Because their mind is already conditioned to believe, I can't. That's us, isn't it? We carry invisible ropes of stress, anxiety, fear of failure, fear of judgment, and we forget how powerful we really are. But some people, they break free. Let me talk to you about one of the most iconic cricketers of India. He was from Ranchi, by the way. You guessed it correctly, Mahendra Singh Dhoni. Under the pressure of a billion people watching,
He was under the pressure of winning the World Cup. He didn't panic. He didn't overthink. He stayed calm. How, you may ask? Because he trained not just his body, but his mind to stay calm. That calm mind made him a champion. But not all heroes are famous. I will now take you to the world of Arunima Sinha. If you don't know about her, let me tell you. Arunima Sinha, a national volleyball player. She was thrown from a moving train. She lost her leg and she was told that she would never be able to walk again. But a different voice in her mind said, I will rise. She became the first female amputee to climb the Mount Everest. Friends, look around you. We all have jobs, exams, family pressure, fear of not being enough. We try to look powerful on the outside, but how often do we check on the inside? A healthy mind isn't about being happy all the time. It's about not giving up. It's about living life, not escaping it. It's the choice to move forward, even with tears in your eyes. So I'm not asking you to run 10 kilometers or start a new time. I'm asking you to pause, breathe, rest, reflect, because that's where a healthy life begins. So let's not live like elephants, shall we? Held back by thoughts we can control. As we open our minds, our lives will follow. As we nourish our minds, we open the door to a life that is truly vibrant and full of possibilities. We may face many difficulties, setbacks, but as the writer Maya Angelou once said, we may face many difficulties, we may face many defeats, but we must not be defeated. I would like to end this declamation with a poem that was composed by my teacher. So here it goes. A man left in despair with all the negativity in the air. People around him said, you can't. And all the problems became huge and giant. Surprisingly, he heard a voice that made him stand and rise. He started to fly, he touched the sky. And that voice, my friends, was none other but his own. Thank you, and I hope you live a healthy life with a healthy mind. Thank you. Thank you, Aryan. Now, may I welcome Ranveer Rathore from Jawahar Vidya Mandir, Siam. Good afternoon to one and all present here. I stand before you with a very heavy heart. By the time I'll be done speaking, 5 people in the whole wide world will have committed suicide. I believe it is the most degraded form of death one could achieve, but also the heaviest and most painful. But why? The simple and the most important reason is because they can't talk. Many of us are so busy in our own lifestyles, we tend to forget that there are friends around us, there are people who you might have not contacted in years, and they might be going through tough times. You need to talk to them. On 28th of April 2025, at exactly 11 a.m., my ICSE results came in. I was shocked. It was not at all what I expected. I got a mere 90% where my friends were at 94, 96, 97, whatnot. I was broken. I couldn't hold myself together. I collapsed. I started to break down. But in that moment, for me it was my father who held me together. He made me realize that I was enough, but I can do better, and I know many of us can. In that very moment, he made me realize that talking is the key. He made me have sincere conversations with my friends and family members, and I slowly realized that it was okay. The trauma was still there, and I say I'm still recovering from the math. Oh my God, the PTSD it gives me. But still, everyone slowly recovers. But the only way one can do that is by talking. Like I'm forgetting him, I'm so sorry. But like the organizer said, that as he said, "Gap karna bahut zaruri hai." That's the thing. We need to talk.
I also have a friend who unfortunately is schizophrenic, many of you might know. It's a disease, it's a mental disorder where you start to see things which are not there, you start to hear things. So the only thing I do is make him feel normal. Text him in a week or two and ask him, how are you? How are your tests going? How are the reports coming? How are the medical reports coming? And that's what I want you to take a message from today's session. I'm not here to preach you about some lifestyle, what we should achieve, or like many of my worthy opponents said, that we should stay away from smartphones, have no screen Sundays. That is all good at its own place. But what we can do at an individual, practical level is talk. We have many friends who might be going through so many terrible things we don't know, but they just put on a smile and go through the day normally. Let's ask them, how are you? How are things at home? How are you holding up these days? How is your mental health? Why do you seem depressed? What happened? These small conversations go a far way. There was a case in the Netherlands where a person was about to commit suicide, and that very moment he got a call. It was a cross connection, it was not supposed to get to him. But that call saved his life. That very call, the person on the other side of the line, made him realize when he got to know that he's going to commit suicide, that it's not worth it. Maybe if everyone of just starts talking to each other, we can reduce this number a lot down, and I know we can. But what are the ways? Well, it all comes down under the umbrella of awareness. There is still a stigma about mental health. We do not treat anxiety and depression the same way we treat diabetes and a hand fracture, which is wrong. And I'm so glad that my nation has come so far in tackling the stigma, but I know we can do better. I know each and every one of us can do better, and we will do better, because that's what a great nation like us aspires to do, and that's what we will do. Our society is going through terrible things at times. There are many reasons for huge unemployment, and people get so depressed and stressed by it that they start to commit suicide, and we know that we can stop that just by talking. So at the end, I would just want to give you one message. Go home, text a friend of yours who you haven't talked in a while. Text your grandparents who might be lonely. Text that one uncle who is quite alone. Text these people, talk to them. Just don't even text, give them a call. How are they? How are things going? Maybe that will make them feel better. And I hope so that you will do that. Thank you. Thank you, Ranveer. Now can we have Adrita Anand from Kerali School? One second. This is a blank sheet of paper for your information. Good morning, honorable judges, my reading audience, and my worthy opponents. Today, I stand before you, not just as a young person, but as a voice of an entire generation that is often misunderstood, ignored, and silenced when it comes to one of the most crucial issues of our time: mental health. Tell me, why is mental health still a taboo, still buried under layers of stigma? We are expected to smile, to perform, and to achieve. But many of us, in fact, 14% of us face psychiatric disabilities. And the unfortunate aspect is, we are told to just get over it. But where do these issues even start from? For a lot of people, for many of us, the root causes lies at home. Constant family fights, pressure to be satisfactory, social media expectation, loneliness, exhaustion and burden. It's like carrying this mountain on our shoulders every single day, because it is truly a battle on our mind that no one else can witness. Mental health is dangerous, and the consequences, well, so are they.
Depression steals our motivation, anxiety takes away our sleep. Some turn to addiction to escape, and some harm themselves just to feel something. And sometimes silence wins. A silence which ends in losing a young life way too soon. So today I stand before you, speaking about this taboo, this stigma, and I want all of you to think about what was the point in my life that I thought that I was under pressure. I was drowning, but you're not. You're not drowning, my friends. Come up to the surface, look around you. There's people who have difficult situation than you are currently in. Because this world is large. It's wide. The population is very large. Our healthy mind leads you to a healthy life indeed. When our mind is calm, collected, our life tends to fall into balance. We think clearly, we handle stress better. And there are a lot of cases, a lot of challenges that we overcome. As a student, this is a heart to heart. As a student, we face a lot of pressure. A lot of pressure which ends in ways which I can't even imagine. But not as someone who is speaking here, but as a friend and as someone who understands you. If there's no one in your life that you can talk to, I am here. Your parents are here, your teachers are here. A healthy life leads into a healthy mind, and vice versa. And why did I say the quote opposite? Because when you eat healthy, when you sleep early, it eventually leads into a healthy mind. So I request all of you, break the taboo, crush the stigma, and create a world where no one suffers in silence. Because mental health is not an individual issue, it's a collective responsibility. I, the youth, holds a black sheet of paper, which is the future of our country. This is my pen. So if I am so weak and I shatter so easily, how can I make this country a better one? Once again, all of you here, think the moment in your life you were free. Think about the time when you thought there is no one better than me. And that moment is truly something that unveils your caliber. Thank you so much. Thank you, Adrita. Now I request Akshara Sinha to come up on the stage. She is representing Lady K.C. Roy Memorial School. This, I say, is our mind. A simple glass of water, once clear, but now clouded, disturbed and restless. In today's fast-moving world, our thoughts are like this muddy water, constantly stirred by anxiety, stress, chaos and comparison. We rush, we worry, we overthink until our minds become so clouded that we can't even see through them. But when we place this glass down, when we let it rest for a while, our mind becomes clear. The mud begins to settle. The water turns clear again. And in that stillness, in that calm, lies the true power of human mind. This, my audience, is not my idea. It's a teaching of Gautam Buddha, who used this, for example, to show that peace is not something you find outside. It's something that you allow within. A healthy mind is not about having no thoughts. It is about learning how to let the mud settle. Today, as I, Akshara Sinha from Lady K.C. Roy Memorial School,
stand on the occasion of World Mental Health Day before this esteemed psychographic society, my topic, healthy mind, healthy life, feels more relevant than ever. We often talk about fitness. We count calories, measure steps, chase the perfect body. But how many of us pause and ask, is my mind healthy? Because no matter how strong your body is, if your thoughts are toxic, your peace will remain fragile. A healthy mind doesn't just make life better, it defines the life itself. Science today confirms what our ancient philosophies have always taught. Stress is not just an emotion. Remember, stress is not just an emotion, it's a silent epidemic. I repeat, it's a silent epidemic. We feed our bodies 3 times a day, why? To get a healthy body. But what about our mind? We literally let our mind starve. We let our mind starve. Fill it too with good thoughts, positive surrounding, and meaningfulness. Let me remind you that meditation is not an escape. It's exercise for the mind. Kindness is not weakness. It's nutrition for the soul. And balance is not luxury. Again, balance is not luxury, it's necessity. I want you all to imagine another thing. We all have seen water boiling. When the water boils, it turns into steam. The same pure water that once calmed is now powerful enough to move oceans and shape destinies. Our mind too holds that dual power. When heated by anger or anxiety, it can destroy. But when harnessed with discipline and direction, it can do miracles. My elder brother always says that our body listens to our mind the same way a soldier listens to the commander. You know, he never takes medicine for small diseases. He uses his mind to cause diseases and even cure it. Such strong is our mind. So there's never a question that is my mind strong, because it always is. The question is it calm? Is it clear? Is it healthy? Check your mind the same way you look in the front of the mirror to see if you look perfect today, because in the end, a healthy life is not made by the food you eat, the steps you walk. It is about the thoughts you nurture, the peace you practice, and the kindness you provide. You know, we live in an age where people wear smartwatches to count the steps, but forget to count the blessings. Where gyms are full, but hearts are literally empty. You know, healthy life, healthy mind is not just a food. It's the secret ingredient of the recipe of happiness. You know, I have seen a very close friend of mine literally struggling day and night because of the stress. Even if we talk about teenagers, there's so much pressure all around. Parental pressure, academic pressure, peer pressure. In fact, I would like to thank the organizers of the Psychographic Society for giving me this wonderful opportunity to speak on this extremely important topic, which is still not paid much heed. So, take a long breath, live gently, think clearly, because in the end, if your mind is healthy, your life becomes crystal clear too. Let the mud settle, make a happy and healthy India. Thank you. Thank you, Akshara. The next participant is Arfa Kutub from Loreto Convent. The great poet Alexander Pope once said, "One should always take care of one's health. Oh dear, as a matter of fact, health is wealth." A very good afternoon to one and all present here. I am Arfa Kutub, a student of class 9 from Loreto Convent. A sound mind in a sound body. These simple words carry a timeless truth. Our mind and body are not separate. They are the two sides of the same coin, shaping the quality and happiness of our lives. Health is not simply the absence of illness. True health is found where the mind and body function in
concentrate on studies? Can an athlete with a troubled mind win a race? The answer is simply no. A weak body drags down the mind, and a restless mind saps the body's strength. We must nurture both sides to achieve real well-being. So, how do we maintain this essential balance? First, start with care of the body. Treat your body as a finely tuned machine which deserves proper fuel. That is, a balanced diet, abundant water, and sufficient rest. Sleep nowadays is often underestimated, but it acts as nature's fuel, restoring body strength and refreshing the mind for new challenges. Health is not only about bones and muscles. It is about thoughts and emotions too. Cultivate a mind free from anger, jealousy, and hatred. Fill it instead with peace, positivity, and patience. Meditation and mindfulness helps us recognize our thoughts, control them, and focus on what matters the most. This mental clarity leads to strength through both focus and calmness. Embrace physical activities. Exercise, whether through sports or a simple walk, keeps the body fit and sharpens brain functions. Ancient wisdom provides us with yoga and pranayama, not just exercises for the body, but methods to calm one's mind and build resilience. Beyond habits, our values and actions also shape the health of the mind. A healthy mind finds expression in kindness, compassion, and honesty. Living a life full of integrity and helping others gives us inner satisfaction. After all, what good is a strong body and a healthy mind when it is not guided by a caring heart? Remember, health is not just a gift, it is a responsibility. When we nurture both mind and body, success follows, happiness blossoms, and life gains meaning and richness. Let us recall the wisdom of Alexander Pope. A sound mind in a sound body is a short yet a full description of a happy state in this world. This is not just an old saying, but a way of life, guiding each one of us present here towards a brighter and healthier journey. Thank you. Thank you, Alpha. I would request Harsita Srivastav from Manan Vidya Public School. So there is slight change. I would request judges to make the correction. Harsita Srivastav would be representing Manan Vidya Public School instead of Ishant Kumar. As youth, our strength lies in healthy mind and healthy body. Let's explore how we can build both of this. Good afternoon, respected judges, teachers, and my dear fellow mates. I, Harshita Srivastav of Manan Vidya Mandrakhan Metho School, would like to share my thoughts on healthy mind and healthy body. Okay, so when we talk about healthy life and healthy body, it doesn't mean physical fitness. It doesn't mean physical fitness. It doesn't mean strength, muscles, or medals. Physical fitness, it means if you go to a gym to work hard for your good muscles, for your good body, that doesn't give you peace. Basically, healthy mind and healthy life is related to peace. If you are, I remember in Bhagavad Gita, one shlok
It is in chapter 16. It is in chapter 16, verse 16, 17, where Lord Krishna said that there is no possibility for one to become a yogi if he or she eats too much or eats too little, sleeps too much or sleeps too little. What we need is we have to balance each and everything in our life and then work and then go, and that makes our work even success. Now we get pressures of lot of things in our surroundings. Like as a student, all of us get pressures during exam, which destroys our mental peace, and that is really affecting in our exams, which destroys our results even. So I remember an IS officer's interview, Miss Shrishti, she said that while her exams, she has planned herself very clearly that what she should do first and what she should do next. She has planned each and everything to get a better results, and she is at the position today that we hear her interviews. I am also inspired by my father. He always says that the mind controls our body. But if the mind controls, if we let our mind, our thoughts control our body, we fall. But if we control our thoughts, if we control our minds, we rise. Once my father said to me that if you think that you can't solve this question, before reading the question, you would never be able to solve that question. So don't let your mind think negative. Keep your mind positive and then work. Half of the winning. One of my teachers reminded me today in the morning that half of the winning, half of the game is won when your mind thinks that you can win, and half of the game is won when you know that you have that confidence to work to get better. So, with this, I will end my speech. Thank you so much for giving me the chance to speak. आपके लिए एक और सरप्राइज है, पूरा खुलासा बाद में करेंगे. आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, आज अभी ये सेशन होगा, के बाद प्राइज है, लंच भी है. हम उन व्यक्ति से आपको मिलाएंगे. आपको लगता होगा टॉपर लोग को टेंशन नहीं होता होगा. आप सोच सकते हैं इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? जेई. सबसे बड़ा रैंक कौन सा होगा? AIR. अगर मैं कहूं कि AIR-1 IIT का हमारे बीच में है, वेलकमिंग प्रसून झा सर, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. झारखंड, बिहार में. और ये सरप्राइज रखा था, सर भी अभी तक पहुंचे, सुबह बैंगलोर से आए हैं, तो बातचीत हुई, तो मैंने पूरा सर बैठा जाए, लास्ट में इनसे भी इंटरेक्शन होगा, खूब खूब के बात कीजिएगा. इनसे भी यही कहूंगा, देखिए आप सुनने की स्थिति में है ना, घर जाने गड़बड़ी नहीं है ना, ठीक है, खाएंगे देखेंगे. AIR-1 को भी दुख दर्द उतना था, इनके भी टीचर उतने ही इनको तंग करते थे, लेकिन झेल झेल के ये लोग आगे बढ़े. ओवर टू यू सर, एंड वेल वंस अगेन गिव अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मी. Thank you, sir, and thank you, Harshita. Now, may I welcome Suryanshi Ranjan from Sarda Global School. Suryanshi Ranjan? Oh, I'm sorry, Suryanshi Ranjan. Good morning to everyone. Good morning to the judges. Good morning to the Good morning to the teachers, and good morning to one and all. Today I want to talk about something which is often misunderstood and yet is deeply rooted to mental health: therapy. For many of us, when we hear the word therapy, we imagine hospitals, medication, or something meant only for serious mental illnesses or physical damage, right? But that's not true. Therapy is not only for people who are broken. It's for people who want to heal, grow, and understand themselves better. I want to talk about something that has been a big part of me ever since. A long time. Anxiety. It's not easy to admit that I still have it.
I still overthink everything. I still get nervous. Even when I'm standing here, my hands are literally shaking. I am reading this off of my phone just because I don't have the courage, but I am still trying, and that's a good thing. Therapy is not a sign of illness, it's a path to wellness. In our society, people are often told to be strong, don't cry, or just get over it, right? We are taught to hide our emotions instead of understanding them. But therapy teaches us that feeling deeply is not a weakness, it's a part of being human. Therapy is a safe space, a place where we can untangle our thoughts, express our fears, and learn to cope with life's challenges. It helps us understand what we feel, the way we do, how to manage our emotions when it gets in our way. Seeking therapy doesn't mean something is wrong with you. It means you're choosing to take care of your own self. There were times I wanted to give up on speaking, on competing, even on trying. But I realized something. Anxiety does not define me at all. It's a part of me, and I will learn to keep that as just a part and not get it to my head. I've been to therapy and it helped. Not by fixing me, but by helping me understand that it's okay to feel this way. It's okay to be scared, and it's okay to feel anxious or nervous. It's okay to stumble, to be scared, and to still show up. Just take a deep breath and keep going. Every day I try a little harder to speak, to smile, to live without letting fear take over. Some days are better, some aren't. But what matters is that I'm truly trying. So yeah, I may not be perfect, but I'm definitely not bad or like worse how I was before. Okay, so I got to know that this was a proper declamation, and I have chosen Barack Obama, and this is not my school uniform. So yeah, I'm not as powerful as Barack Obama, but I'm here, being real, being honest, and giving my best. And if anyone's out there feeling the same way, please know you're not alone, you're not weak, you're just simply human. Sitting in that room and talking openly about my thoughts made me realize how powerful listening and being heard can be. My therapist didn't give me all the favors and all the right answers, but they helped me find them myself. That's the beauty of therapy. It helps you to connect to your own strengths. Thank you. So that was Suryans. Thank you, Suryans. We have 6 more contestants to come up. Now, may I welcome Anvi Mahanandi Barai from South Point School, Bundu. A very healthy greetings to the jury members, teachers, students, and one and all present here. I'm Anvi Mahanandi from South Point Public School, and today I'm here to talk on the topic Healthy Mind, Healthy Life. Well, this topic is very familiar to almost all of us, as we have been listening since our childhood that health is the real wealth. But today, I want to ask a question to you all. I want to ask to you all that are we really healthy? And are we really leading a healthy life? Today, I'm here not just to highlight this question, but also for an answer. Well, let's move forward. In the current scenario, if we see, then there are various perspectives related to health. Like people are influenced by health mentors, some are influenced by specialists, some by influencers, and some by celebrities. Each and every one to give a new tip on health. Now let's see that what the World Health Organization says. According to it, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not just the absence of disease.
But in the present, there is something else only. Let's take a student life as an example. I have seen many students who have a hectic study schedule. They have to play sports also to remain fit. Even their balanced diet is also maintained very well. But what if I say that student is not mentally fit? What if I say that student doesn't love his life? What if I say that student has anxiety and stress issues? Will you again call him a healthy life? No, absolutely not. We often hear news headlines stating that an IIT student attempts suicides even after being in his final year. Ladies and gentlemen, these are not just news headlines, but these are the reminders that we need to look after. Because we have to understand. We have to understand that our mind also matters. Otherwise, the term healthy life will just become a concept and the news headlines a harsh reality. So now let's see that what Swami Vivekananda said. He said that the youths are the future of the nation. Then I asked in this hall that why the youths today are not healthy. What is stopping us to lead a healthy life even after 78 years of independence? It's just the distance between us and our actions led by a healthy mindset. So now, as we are aware of the question, let's create the answer together. Let's create a society where each and every soul is free, happy and healthy, not just physically, but mentally too. So now, coming to the main point. We all know that how to remain fit physically, but we should also know that how to remain fit mentally. And there are various ways to do so. One is to come and stand here, speak here. Believe me, today I am feeling like the healthiest soul ever. And there are many ways, like meditation, taking rest, doing yoga, and most importantly from my personal experience, if needed, then don't be afraid to go to a psychiatrist. Believe me, don't be ashamed of the thought कि पड़ोस वाली शर्मा आंटी क्या कहेंगी, दिमागी डॉक्टर के पास जा रहा है, पागल हो गया है, देखो इसे. Never be ashamed of the thought because it's your life and you have the freedom, you have the opportunity and whatever you call it, you have it. It is worth for you that you should go and lead a healthy life. Well, so on the occasion of World Mental Health Day, I just want to say to you all that let's not just listen to what we have listening till now, very beautiful declamations going all around, but also let's implement these topics to our life. Let's create a nation where each and every soul is happy and healthy, not just physically, but mentally too. So now, at last, I just want to say, anxiety, depression, pressure, मम्मी पापा का प्रेशर, एग्जाम्स का प्रेशर, दोस्तों हटाओ ये सारी दुविधाओं को और फोकस करो अपने मटर पनीर जैसे हेल्दी लाइफ पे. So with these, I would just want to say thank you. Thank you, Anvi. Now may I welcome Aniket Kumar from SR DAV School, Pundal. Healthy mind, healthy life. Strength is nothing without a healthy mind and mindfulness. Honorable judges, respected audience, teachers, and all my loving friends. I, Master Aniket Kumar, representing my school SRDV Public School, on the occasion of World Mental Health Day, is standing before you to discuss a very common problem that is acting as a slow destroyer of our lives, but is being ignored by all of us. Our mind has immense power. It can even shape the way we think for ourselves and live our lives. And we should always be grateful for the Almighty for giving us this great tool. Without it, we can't imagine our lives. And while respecting its power, we should always keep this in our mind that our mental health is as important as our physical one. We are discussing this problem on a serious note because a major population is its major concern. Most people don't take care of their mind and they are becoming a real threat for their own life. When a person doesn't take care of his or her mind, various negative energies like depression, stress, and anxiety steps in their life that you have heard till now. But now we often hear that quote, what we say, health is wealth. But most of us don't know its meaning. It doesn't only refers to our strong physical body. It refers to the combination of our
mental as well as physical health, which leads us to a healthy lifestyle. Now, let us see what are the things that we can do to train our mind to be healthy. One major tool I would like to discuss with you all is positivity. When we are positive, we radiate positive energy around ourselves and attract positive things in our lives. So always surround yourself with positive people, because whatever you hear, you start to believe. Whatever you study, you become. And that positivity is consumed by your mind. Your mind shapes your vision, perspective, and life's reality positively. Let us take an example of ancient times. Our ancestors were very smart. They knew the power of their conscious and subconscious mind. They knew what their minds are capable of. If a person has any disease or distress in his or her body, that person was surrounded by some group of people, and these group of people did nothing but said some positive affirmations to that particular person. Like, this disease is nothing before you. You are strong enough to overcome this disease. And without any surgery and medication, on the state of dying, these people magically survived. That's the power of our mind. Think about a person who always keeps on filling up his mind with anger and guilt. That person remains non-energetic and demotivated. But now think about a person who always keeps on filling up his mind with positivity, creativity, and keeps his mind open. In comparison, that person is more attractive, who is living a joyful and calm, peaceful life. Now, friends, but positivity is not enough alone. We need more steps to train our mind to be healthy. Next is our sleep. Now you must be thinking that how our sleep helps us to create a good health of our mind. Let me make you aware of an interesting fact. Each single night, because of your busy schedules, you underestimate your sleep. Every single day, your IQ level decreases by 30 to 40 points. Your memory weakens, focus drops. Thirdly, and lastly, I would like to speak my last point, how to train our mind to be healthy is also very important. Nourishment and proper workout. Obviously, without a proper fuel and energy, even our immensely powered mind can't perform well. Without a proper workout, without boosting our mood, without having that positivity automatically and that confidence that we are looking good from outside, we can't feel positive and lead a success and meaningful life. In conclusion, I would like to say that to live a very successful and a healthy life, we need a healthy mind. Our life is just like a bird, where one wing refers to our physical health and skills, and the other wing our mental health and personality. Without any one of the wing, a person can't fly. And with both the wings, nothing can stop us from achieving our dreams and be successful in our lives. Thank you for listening me patiently and empathetically. Thank you, Aniket. Now please join me in welcoming Rohini Kaushal from Sri Agrasan School, Ramgarh. Good morning to everyone present here, honorable jury members, dignitaries, respected teachers, and my dear colleagues. I'm Rohini Kaushal and I'm truly honored to represent Sri Agrasan School here today, the day that celebrates the strength of the mind and the courage it takes to care for it. Mental health is not a sign of weakness. It is the strength, it is the foundation of strength that we have inside us. It shapes how we think, act, and face challenges. We often talk about success and achievements, but we rarely talk about balance and peace of mind, the very things that sustains the success. A healthy mind creates a healthy being and a strong person. When we have the patience, peace inside our inner world, no external storm can truly shake us. So, sometimes the weight of our own thoughts seems too heavy and the path ahead seems impossible. Imagine a tiny seed buried deep down inside the soil.
It struggles, waits patiently, and gradually grows into a strong, tall tree. Even in darkness, it never gives up. And one day, it reaches the sunlight. As a biology student and psychology enthusiast, I feel so much fascinated about how the brain, a complex organ, is not just full of neurons and signals, but also a beautiful and magnificent mixture of balance and resilience. So at the end, I want to share a beautiful fact that I learned in my book is according to all aerodynamic laws, a bumblebee cannot fly because its body weight is not in the right proportion to its wingspan. But ignoring these laws, the bee flies. So if the bee tries to cope up with his or her disabilities, why shouldn't we? So let's not just make this day a symbol. Let's make this a promise to speak without fear and to make mental health a part of every conversation where nobody fears to say that I am not okay. Our minds are fire. It faces winds and rain, and yet it burns brighter. Thank you for your time, your ears, and your fire. Thank you, Rohini. Now I invite Minza Iqbal from St. Xavier's School, Ranchi. A strong body can fight storms, but only a strong mind can create a rainbow after it. Good afternoon, everyone. I am Minza Iqbal from St. Xavier's, and I want you all to take a look around. Even the richest of billionaires cannot buy one night of peaceful sleep. Or the strongest of athletes cannot run away from anxiety. Yet, a farmer humming at work shows us that peace lies not in wealth or power, but in the quiet soil of mind. Our mind doesn't become polluted overnight. It happens slowly, like dust settling into a mirror until it no longer can reflect. From the moment we wake up, our minds are bombarded with notifications, questions, deadlines, expectations. It's like our brains are never silent. And when there is no silence, how can peace grow? Stress is another factor. We stress more than we should. We carry more than we should. Our ancestors worried about finding food, and we worry about marks, grades, and expectations and reality, and of course, likes on our screen. The load has changed, but the pressure has just doubled. Now that we are talking about minds, we cannot ignore emotions. We bottle sadness instead of expressing it. We hide anxiety and anger instead of healing it. And just like a closed room collecting stale air, our mind collects toxins when emotions are left unchecked. Social media is another factor. It shows us perfect lives, happy stories, and success on beaches. But we forget that it is a highlight reel and not reality. So we compare our behind the scenes to someone else's spotlight, making our minds restless and insecure. But hey, our mind is walking through a valley with two voices. One is wisdom, one is worry. One is gratefulness, one is grumbling. One is blame, one is faith. But hey, we are humans, and sometimes our decisions are based on our emotions rather than a keen conscience. It is on our part to choose wisely. Michelle Phillips, one of world's most decorated Olympic swimmers, he suffered with depression and anxiety. But he came out, sought therapy, shared his experience or his battling experience to everyone, making them feel seen and come out without any shame. He is not just an athlete, but a beacon of hope, reminding us that strength is not in metals or muscles.
It is in the brave act of taking care of your mind. Your mind is like a factory, a mental factory. Whatever you think about all day long pours ingredients into this mental factory. Now, can you imagine dumping a bale of trash and coming out with a rich, dynamic, and positive life? It can't be done. You decide what goes into your mental factory. Be very clear about it. Don't let anyone intervene. A healthy mind can only be achieved by holistic means. Properly exercising floods our brains with mood boosting endorphins. Proper breathing creates pockets of calm amidst chaos. Properly resting, balanced diet, and simply laughing fuels resilience. Most importantly, setting up boundaries. Choosing positive thoughts creates pockets of calm. My dear friends, your mind is not just a luxury, it is the foundation of a healthy life. So take care of your thoughts like you take care of your bodies, because in the end, your body will only lead you through the day, but your mind will lead you through your life. Thank you, everyone. So that was Minza. Thank you, Minza. Now, can we have Astha Singh from Vidya Vikas Public School? Good morning, everyone. A peaceful mind is the soil where a vibrant life blooms. So nurture your thoughts and the world will flourish. With this beautiful quote, I, Asta Singh from Vindhya Vikas Public School, would like to thank you all. Thank the dignitaries and everyone sitting over here for giving me this opportunity to speak up. To speak up on this vital topic. Healthy mind, healthy life. A truly healthy life. Is it a matter of chance? No, it is a direct result of a healthy mind. Our mind is the ultimate architect of a reality. It governs our resilience, fuels us, strengthens our abilities, which helps us to grow and thrive in every aspect of our life. To preserve and strengthen this mental vitality, we must go just beyond awareness, and these include practicing mindfulness to stay grounded in the present moment, nurturing strong social bonds that not only uplift us but also shapes us. Prioritizing restorative sleep, which renews both body and mind, and engaging ourselves in physical activities, which is proven to boost mental clarity and health. These are just habits. They are the pillars of a healthy inner life. Let's commit of making mental wellness not just a topic of discussion today, but a daily lived practice. Let's commit to this. Let's build a culture where seeking support is not a sign of weakness, but a sign of strength. Let's commit this. Not just engaging us in different activities that are not worth, but things that are worth it. We must. The path of inner peace is not just a journey. It's a journey of small conscious steps taken towards perfection. Let's remember that every small step we take is a perfection. It's a perfect act we take towards making ourselves active, making our brain come up. And not only these activities helps us to grow and thrive in every aspect of our life, but also to improve us, to improve our mental vitality and improving our society. Today, when I speak here, I believe that every person is perfect. Not just in an imperfect way, but in the way where we see us. Let's commit of making life that not only perfect, but also successful, whole, balanced. Committing to ourselves is like making one day step further above everyone, above the world, above the society. Let's make this journey more beautiful, more resilient, and more purposeful. To conclude, I would like to say, minds are not only fuels of the fire that will live, but also the societal love that we give to us, to our parents, our teachers, and everyone sitting over here.
is not just a person filled with enthusiasm, but also with love, laughter, and journey full of experiences. The students have a have a great way ahead to go. So let's commit of making lives successful, but also purposeful, whole, and balanced. Thank you, and have a great day ahead. Thank you, Astha. So, as we reach to the last contestant of this declamation contest, please join me in welcoming Khushi Sukla from Surendranath School. A healthy mind is the silent architect of a meaningful life. Good afternoon, respected judges, teachers, and my fellow participants. It is truly an honor for me, Khushi Shukla, representing my school, Surendranath Centenary School, to stand here in front of you all and speak on a topic that lies at the very heart of human well-being. Healthy mind, healthy life. In an age of endless deadliness, academic pressure, digital distractions, and societal expectations, we often forget that true health is not merely about absence of illness. It is a state of complete physical, mental, and emotional well-being. Let us take a moment to reflect. We remember to drink enough water, to take our vitamins and exercise. But do we remember to take care of our minds? To pause, to breathe, to heal. Do we detox our thoughts the way we detox our bodies? No, right? One of the most delicate yet powerful things in this world is a child's mind. And sadly, it is the most vulnerable thing. A child's mental health is profoundly influenced by his surroundings, like his parents' behavior, school's environment, peers' influence. A friend can be a great source of strength or stress. And lastly, societal standards, because society glorifies perfection as a flawless body, or top grades, or constant success, which makes children silently feel that being enough is not enough. The consequences of all these are rising cases of depression, anxiety, self-harm, and even suicides among the youth. These are not just the rising statistics, but they are cries for help. It is not just a health crisis, it is a crisis of awareness, compassion, and priorities. But here's a good news. Healing is possible. Strength can be rebuilt. There are a few real life examples that proved it. And like Anushka Sharma, one of Bollywood's most successful and admired actress. She publicly spoke that she also went into anxiety, and Seek therapy helped her immensely. Michael Phelps, an Olympic legend with 23 gold medals, he too fell into depression, anxiety, and suicidal thoughts. But today he is not only recovered but also became a global voice for mental wellness. These stories remind us that mental illness is not the end of the road. It is just a bend and not a break. I am going to tell you people 5 ways
only and only 5 ways by which we can nurture a healthy mind. By practicing mindfulness, which means being fully present and not being judgmental. By seeking help without shame, because asking for help is a sign of strength, not weakness. By expressing and not suppressing our emotions. By building real human connections beyond likes and followers. And lastly, and most importantly, by choosing kindness towards others and towards ourselves. In conclusion, I would like to speak that a sound mind creates a sound life. The thoughts we nurture shape the life we live. Mental health is not a privilege, it is a right. And thank you. Thank you, Khushi. With this, we come to the end of this contest. Now I invite the judges if they have any comment or observation to share. Well, it was a pleasure to watch so much of stage confidence all the participants had. So it was very difficult. It was not an easy job to judge. And I am always a lenient examiner. So I have given maximum marks to everyone. But can I say to you? But there is one winner for me. ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप जितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं सबने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, इसलिए किसी को जज करना मुश्किल है कि किसने अच्छा किया किसने ख़राब किया, क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो इस दिन मतलब हम लोगों को मेंटल हेल्थ बढ़ाने का दिन है, सबको ये करने का, एम्पावर करने का दिन है। सबने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लास 9th के स्टूडेंट इतने अच्छे से मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस के इश्यूज को बताएंगे। तो आज का दिन था जजमेंट का, हम लोगों का ये करना था, लेकिन इसमें ये नहीं सोचना है कि किसने अच्छा किया किसने ख़राब किया। ओवरऑल सबके प्रेजेंटेशन से हम लोगों ने बहुत माइनरली डिफ्रेंशिएट किया है और सबने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। थैंक यू। यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी डिग्निटरीज हैं, हमारे डायरेक्टर सर और हमारे जो IIT टीचर्स जो हैं सर हैं, जितने भी लोग हैं, सबका मैं थैंक यू करती हूँ। I would wholeheartedly thank both the judges, Dr. Abhishek Kumar and Dr. Rekha Roy ma'am, for their time. I would also like to thank all the teachers who gave their valuable guidance to these bright minds and accompanied them to this program. And at the last but not the least, I would like to congratulate all the contestants who not only spoke with clarity and confidence, but I must say this, you shared your heart out. So can we have huge round of applause for all of us? Your hard work and practice was at display. Now as we move to the feedback and valedictory session, we will be needing around 4 to 5 minutes. We will get back to you and then we will start the valedictory session. Till then, please stay here and then we will move on for the refreshment. I know you all are like hungry by now, but just stay here for a few more minutes. Thank you. सबसे पहले राहुल जी और पूरे रिलपास के लोगों के लिए जोरदार ताली आइए। आप ही भूखे नहीं हैं, ये लोग भी विद्यार्थी हैं, हाँ अपना काम करते हैं। और एक बात और बता दूं, पूरे इंडिया में IIT मालूम है कितनी सीट है? 18,000 और रिलपास में सिर्फ 12 सीट है में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जैसा कहा है, रिजल्ट अभी बन गया है। हम लोग कहीं न डायरेक्टर सर थे, न हम लोग दूर दूर तक नहीं है उसमें। रिजल्ट सर लोग के हाथ में अभी गया है, कंपाइल हो रहा है। पर रिजल्ट के दो रिजल्ट के पार्ट है। पहला पार्ट है कि ईच वन ऑफ यू इज ए विनर, ठीक है।
तो हम लोग सभी लोगों को अभी अनाउंस करेंगे और मेडल सबको दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद 1 2 3 का जजमेंट होगा। और सर लोग जैसे कहा, मैंने हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कौन अच्छा बोल रहा है। हाँ, हम कुछ देर चले गए अलग रूम में सोचने के लिए। तो नाउ आई रिक्वेस्ट राहुल जी तो अनाउंस। एक सीरियल सर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली स्टेज पे आ जाए जी। हम लोग सभी लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन और मेडल देंगे। फिर 1 2 3 का जब अनाउंसमेंट होगा तो उनको देंगे और फिर टीचर्स का नाम सिद्धार्थ जी अनाउंस करेंगे। सोनाली सर्टिफिकेट लेके आए। इस बीच प्रसून झा सर से रिक्वेस्ट है कृपया मंच पे आए। एक बार जोरदार ताली से पुकारो झारखंड के रत्न का। अभी तक इनका रिकॉर्ड बीट नहीं हुआ है। हाँ, और जी मैं बस 2 लाइन के बारे में बोलूंगा। वो प्रसून झा AIR 1 और उस समय 1993, यस 1993, और बिहार झारखंड में एक कीर्तिमान है इन व्यक्ति का, बोकारो से। इनसे मैं जब भी ऐसे अचीवर मिलते हैं तो मैं ये भी पूछता हूँ कि AIR 1 का टिप्स बताइए। तुमको जरूर चाहते होगे, बता देंगे, मना नहीं करूंगा। बस मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी में कोई कष्ट था कि नहीं। हाँ, कि आप मैंने आपको कोई मेंटल टेंशन था, कोई समस्याएं थी, और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसका कैसे आपने अपने को हैंडल किया। तो मैं जैसा डायरेक्टर सर सजा के मुझे लगा कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो, सर ने कहा नहीं, खुराक पहले उसके बाद सर्टिफिकेट। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रसून झा सर से कि कमेंट कराएं और एक जनरल इंटरेक्शन करें, बताएं सक्सेस मंत्र और मेंटल हेल्थ मंत्र जोरदार ताली के साथ। गुड आफ्टरनून रांची, कैसे हो तुम लोग? अच्छे? बहुत बहुत धन्यवाद रिनपास का, साइकोग्राफिक सोसाइटी, विकास जी का और सब जो यहाँ पर हैं, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जो मेरी बातें सुनने के लिए यहाँ आए हैं। इतना अद्भुत मौका इतना अचानक से मिलेगा, आई एम ओवरवेल्म्ड, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। और इतनी अच्छी बात ये हुई कि जब जैसे मैं आया तो चूँकि थोड़ा देर आया क्योंकि मैं रात को 4 बजे निकला हूँ बेंगलोर से, तो फिर थोड़ा रेस्ट कर रहा था और एग्जैक्ट टाइम वगैरह लॉजिस्टिक कुछ चीज़ें थी, तो पर लेट भी आया। लेकिन जो भी मैंने सुना, इतनी ऑथेंटिक शेयरिंग थी, इतने अच्छे क्वालिटी के आइडियाज़ थे, और मुझे लगा कि काफ़ी काफ़ी हाई लेवल की थिंकिंग है और काफ़ी हम लोग इवॉल्व कर गए हैं in terms of the awareness about mental health, in terms of awareness about happiness. तो आप लोग जैसे जनरेशन X के हुए, मैं भी आई एम ए फादर टू 13-year-old and 20 years old, राइट? और उन लोग से भी मैं हर दिन सीखता हूँ, पर वो लोग आपस में अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो आपस में थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं, पेरेंट्स से थोड़ा कम शेयर करते हैं। तो हम लोग को थोड़ा बहुत पता चलते रहता है हम लोग आपस में। तो पर क्या होता है कि उनसे जो आइडियाज़ मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें मैं सीखता हूँ। और उसी तरह से आज जो स्पीचेस आप लोगों ने दिए उसमें बहुत ही अद्भुत था। एक बच्चे ने जो ऑथेंटिसिटी से मतलब है ट्रूथफुलनेस प्लस वल्नरेबिलिटी। हम लोग ट्रूथफुल चीज़ सब बता देते हैं और अपने आप को वल्नरेबल नहीं दिखाते। इस हिसाब से मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, जिसने एंजाइटी के बारे में बात किया था। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि उसने अपने जो फीलिंग्स थे वो बताए और उसमें उसने कोई झिझक नहीं किया। तो हमारे समय डिफरेंट था, पर फिर भी मैं बताता हूँ। क्लास 7 में मैं BSL स्कूल में था और अच्छा कर रहा था। तभी मेरा भाई है, वो हिल टॉप स्कूल में था, मैं हिंदी मीडियम में था। वो बोला ये टॉपर है, वो और उस कजन्स लोग आए, हम लोग खेल रहे थे। तो उसने बोला कि ये तो टॉपर है। तो जो छोटा मेरा भाई था उसने मुझसे पूछा कि अब शायद उलट हो गया होगा,
एक ने पूछा कि क्वांटिटी क्या होता है, मैं चकरा गया, मैं बोला मुझे नहीं मालूम, मैं बोल भी नहीं पाया, मतलब मैं शॉक्ड था, राइट। तो मैं उसकी जो दीदी थी उसने मुझे बोला कि अमाउंट होता है, मुझे वो भी नहीं मालूम था, राइट, हिंट से भी नहीं हुआ, और इसने मुझे बहुत हीन भावना भर दी। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्लास 6 या 7 की बात है, और ये चलता रहता था। और बोकारो सिटी में मैं चुकी था, तो वहाँ अलग अलग स्कूल से और अलग अलग तरह के धारणाएं पहले से बनी रहती हैं, प्री डिटरमिन्ड। तो वो सबको ओवरकम करना, एक चीज मैंने देखा कि सब अपना काम कर रहे थे। जैसे पापा मुझे अपने, उनके जो साथी थे, मेरे पापा इंजीनियर थे, तो आई कंसिडर माई सेल्फ लिटिल बिट मोर प्रिविलेज्ड देन मेनी, राइट। ही वॉज एजुकेटेड देन, पर क्या था कि वो हमेशा, उन्होंने क्लास 10 तक पढ़ाई की थी, एक्चुअली पहले 11 तक होता था, 11 तक पढ़ाई की थी अपने गांव में, शाहपुर में, और 12 और 13 इंटर जिसको बोलते थे, वो यहाँ पर की थी सेंट जेवियर्स कॉलेज में, राइट। तो इसलिए मुझे कोई एक सेंट जेवियर्स की थी, मिर्जा इकबाल, राइट, सो आई वाज वेरी हैप्पी। सो मेरे पापा भी वहीं पढ़े थे, और उनके रूममेट थे, वो उड़ीसा से आए थे, उनको मैंने करीब 3 साल पहले खोज के निकाला। सो ही, पापा यहाँ से, वो बताए थे, वो उनके रूममेट थे, और वो पापा को बहुत इंस्पायर किए, और पापा हम लोग को इंस्पायर करते थे कि वो क्लास 1 से लेकर 12 तक हमेशा फर्स्ट आए, या 11 तक फिर भी फर्स्ट आए। फिर उन्होंने IIT JEE क्लियर करके IIT खड़गपुर गए, और पापा भी काफ़ी अपने आप को, लेकिन थोड़ा हीन अपने आप को दिखाते थे, हल्का सा, कि मैं नहीं कर पाया। वो भी काफ़ी अच्छा किए, वो BIT में सिंदरी गए, और फिर 72 में उन्होंने क्लियर किया, 73 में फिर वो 1 साल के बाद लेट रिजल्ट था, उसके बाद वो आए यहाँ। तो वो जो इंस्पिरेशन था, उन सब में एक चीज़ जो मिसिंग थी ना, वो थी फियर ऑफ फेलियर को कैसे डील करना सिखाया नहीं गया था। और सो मैंने, कितने आंसू हमने घोटे हैं, और बॉयज होने का एक और घाट है, राइट। सो अगेन, सो गर्ल्स होने का अलग है, पर बॉयज होने का एक है, ये बॉयज कांट क्राई, राइट, स्पेशली उस वक्त तो ऐसा ही था। तो वो सब चीज़ें थी, लेकिन क्या था, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी थी, और कुछ टूल्स भी थे। जैसा कई लोगों ने बोला कि थेरेपी कॉमन नहीं था उतना, और थेरेपिस्ट के पास जाना जो है, उसमें समाज जो है उसके बारे में गलत बात करेगा। तो किसी ने एक बोला था, लड़की ने, कि शर्मा जी बगल वाले क्या बोलेंगे अगर मैं थेरेपिस्ट जाऊंगी। उसी तरह से BGH में था, BGH में एक पीछे एक वार्ड है, और वहाँ क्या है। फिर हम लोगों ने कुछ फ्रेजेस बना दिए थे, कि इसको एक अलग ही जगह बना दिया था, कि थोड़ा सा भी एबरेशन होता था बिहेवियर से, तो बोले तुमको काके भेज देंगे। आई मीन कम ऑन, एवरी रेगुलर ह्यूमन शुड एंड कैन गो टू थेरेपिस्ट, टू इन काके और वेरेवर, बट उसको नॉर्मलाइज करने का टाइम है। जैसा एक और गर्ल ने बोला कि सुसाइड हो रहे हैं IITs वगैरह में भी, तो किसी ने बताया फेल्प्स को क्या इश्यूज थे, ये सब क्या थे। सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन, सक्सेस बेस्ड ऑन 3 hours of things, success that doesn't define you. You should strive to get your own criteria, have self actualization. तो इसी के साथ मैं बस चाहूँगा कि अपनी ओर से जो बात कर रहा हूँ उसको बंद करता हूँ, और विकास जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक। थैंक यू। एक दो सवाल मैं पूछ लेता हूँ बच्चों की तरफ से। क्या आप हर मंडे टेस्ट में 25 लाते थे? अगर मैं 25 नहीं लाऊं तो मैं जीने का अधिकार है या नहीं है? या मैं 24 लाऊंगा तो IIT कर पाऊंगा कि रैंक 1 आएगा कि? इज इट राइट क्वेश्चन? अगर मैथ साइंस में आ गया है, इंग्लिश में नहीं आया तो मैं क्या डूब मरूं? ये इन चीजों से बच्चे जाते हैं। प्लीज आंसर दिस। सो एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज़्यादा रहता है, प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, और दैट डज नॉट डिफाइन मी। तो
उसको बोलेंगे। तो किसी भी फेलियर है, फेलियर से कैसे डील करना, यू नीड टू, आपको फिगर आउट करना है, नंबर 1। और दूसरा है कि हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना है, हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना है, तो यू हैव टू फाइंड योर ट्रू एस्पिरेशंस। तो उसको एक आप देखो कि व्हाट डज दैट मीन, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, राइट। जैसे मैं जब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया तो एक लड़का कॉपी करके लाता था नीलकंठ मिश्रा का नोट्स, मैं उसी से पढ़ता था। AR4 उसको पता भी नहीं था, राइट। संदीप कॉपी करके लाता था, मैं उससे पढ़ता था, उसी से मैं सीखा, ठीक है। बाद में उसको बताया कि मैं तुम्हारा कॉपी करके पढ़ा ये लगभग 8 में मेरा उससे ज़्यादा मार्क्स आ गया था 1-1.5 साल के बाद। पर वो दैट इज़ नॉट द पॉइंट। तो संदीप और नीलकंठ, उनका मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये सोचो। एक और चीज़ जो मैं देखा हूँ, कंपैरिजन अमंग आवर्सेस थोड़ा अवॉइड करो। और मुझ में थोड़ी पैरानॉइड की भावना थी कि मुझे ही फर्स्ट होना और किसी को नहीं होना है। एक था ना थर्ड इडियट, बहुत कम था मुझे, आई वॉज वेरी हम्बल, मच मोर हम्बल देन मेनी अदर्स। बट कुछ लोग में और भी ज़्यादा था, मतलब वो लोग तो जैसे क्या था कि मैं शॉक था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में, वहाँ हम लोग सोचते भी नहीं थे रिजल्ट वगैरह के बारे में। तो वहाँ पे मैं सब ऐड कर रहे हैं, मार्क्स बोल रहे हैं, मतलब जिस तरह से वो होता है IPL में कि मार्क्स ऊपर नीचे जाए, मैं परेशान हो जाता था, मैं देखता भी नहीं था। तो उसी तरह से मंडे टेस्ट वगैरह में भी आप अपने आप को थोड़ा समझाओ, और अगर एंजाइटी हो रही है तो अपने अभिभावक से बात करो, अगर कंफर्टेबल हो, नहीं तो कोई क्लोज फ्रेंड से बात करो आउटसाइड ऑफ द स्कूल में भी, और इससे आगे उभर के उसको सॉल्व करो। थैंक यू विकास जी। और एक क्वेश्चन और सर, हाँ ऐसे नहीं, सब बेचैन है जानने के लिए। अब आपको जो नौकरी मिली, अब AIR1 आप थे, तो जो कम AIR1 वाला होगा उसको अच्छा नौकरी मिलेगा कि नहीं? सो एक्चुअली उस वक्त थोड़ा कम था, पर कंपटीशन एक के बाद एक आता है ना। तो जैसे कई लोग थे, वो हो सकता है IT में नहीं किए, UPSC में अच्छा निकाल लिए। जैसे जिसका 56 आया था वो 5th आ गया UPSC में, लेट से, राइट, एग्जाम्पल। तो और भी एग्जाम्स होंगे। और आज की डेट में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जहां कॉमन इंटेलिजेंस को काफ़ी ऊपर कर दिया गया है, स्किल मैटर्स, डिग्री डज नॉट मैटर। तो आपको इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन होने वाली है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। मैंने एक इंटरव्यू में 2016 में बोला था, हमें जो अपॉर्चुनिटी, हमें जो बोला गया था, टॉप 5 करियर चॉइसेस फॉर अस इज इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग। आज के डेट में बहुत सारे हैं। तो मैं एग्जांपल भी देता हूँ। एक पप्पू भैया थे, सॉरी मेरे को मारेंगे वो, तो एक हिमांशु शेखर भैया थे, उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की, फिर MBA किया, और वो बहुत अच्छा जॉब करे। हेलो, आप मैडम आपके जस्ट आगे, उनको बोल दीजिए बात सुनने। या सो तो वो CEO ऑफ यूनिलीवर इंडोनेशिया थे, राइट। तो आई गिव एग्जांपल। पर जब वो गए थे BHU में इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो उनको सब लोग बोल रहे थे ही इज ए फेलियर। तो उसी तरह से आई थिंक ऐसा नहीं है कि जिनको JEE कम है वो सब उलटफेर होते रहेगा। तो सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट द एंड, फेलियर कैन बी चेंज। थैंक यू सर, प्लीज करना, अभी बहुत लोग हैं। एक ओपन, अरे ये मौका जाने नहीं देना है। अमूल रंजन सर के सौजन्य से नाश्ता भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। अब बीच में है ना पैकेट बढ़िया वाला आ गया, रांची का बेस्ट है, पता कर लिया अभी हम इसी चक्कर में पता नहीं ये लोग कैसे करेंगे। ठीक है, मेरे को दिक्कत एक क्वेश्चन, अभी बहुत खुशी हो रही है, टीचर्स राउंड पहले करते हैं। एक शिक्षक को 4 घंटे से हम लोग चुप रखे हुए हैं, कितनी बड़ी सजा है ये मेंटल हेल्थ। तो मैडम प्लीज आप एक सवाल पूछना चाह रही थी। एनी टीचर, बच्चे फील फ्री, जो जी श्योर। My cousin, yeah. So this is a common things which I have noticed, that language is a big barrier. So the person, those who are having a good language skill in English, feel more confident, and other are also considered that the person might be more intelligent and all, and vice versa, the person who are having not good in English, they feel low confident. So what do you want to clear on this respect of that things? So Okay. here our Yeah. students are seated.
So I think so those who are not very good, they are intelligent but not very good in English. Right. What they have to think about that. ओके सो आइडिया इम्पोर्टेंट है, उसको कम्युनिकेट करना भी इम्पोर्टेंट है, पर वो उसको एम्बेलिश करके कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी नहीं है। और भाषा आज के दिन में उसको एम्बेलिश करना एक कमोडिटी बन गया है। आपको जो ट्रूथफुल आइडिया है, जो जेन्युइन वैल्यू है आपके आइडिया में, वो आप कैसा भी लिख दो, चैट जीपीटी को बोल दो या किसी एलएलएम को बोल दो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, मेक इट फॉर्मल, मेक ए पावर पॉइंट ऑफ इट यूजिंग gamma.app and many other things, that advantage goes away. मेरी जो लैंड लेडी है और मेरे नेबर्स हैं, कई लोग को न इंग्लिश आती है न हिंदी आती है, मैं उनसे सामने ट्रांसलेटर करके बात कर लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले परसों मुझे, जब मैं ऑफिस में था तो मुझे फ़ोन आया पुलिस का, 3-4 बार आया कि कार हटानी है, तो मैंने बोला, उसको बोल दिया 2 बजे के बाद हटा दूंगा। फिर शाम को मैं गया, फिर शुरू में वो बात नहीं कर रही थी, एंड बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू एडमिट। मैं बोला कि आई एम ए नेबर हियर, ये वो राइट समझाया। फिर बाद में बोली तुम्हारा रूम इधर है, हम बोले हाँ। मैं बोला कि भाव्या मैडम है ना, हाँ मैं जानती हूँ। तो फिर पता चला कि वो डॉग को खिलाने के लिए वो जगह रखती थी, तो फिर उन्होंने, हम लोग फिर दोस्त बन गए राइट। सो शी इज अ विडो राइट, जो भी सुजा जोसेफ और समथिंग। तो भाषा जो है वो भी एक ये हो जाएगी। कई लोग हैं जो कोरिया जब गया था मेरा फ्रेंड, तो मोबाइल में ऐप है, जैसे कुछ ऑफलाइन भी काम करता है, पिक्सल था उसके पास, करता है, और भी में होगा राइट। सो ये जो एम्बेलिश करने की बात है ना, वो कम होगा। थिंक अबाउट द वैल्यू दैट यू क्रिएट, थिंक अबाउट द यूजर डिलाइट दैट यू विल प्रोवाइड, थिंक अबाउट, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत है। और भाषा में, एक भाषा में आपको अच्छी होनी चाहिए पकड़, हाँ। और इंडिया में अगर आपको तो थोड़ा हायर एजुकेशन में इंग्लिश की नॉलेज चाहिए होती है, तो पर अगर आपके पास स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो रिटन इंग्लिश अच्छा कर लो। यू हैव टू पुट सम एफर्ट इनटू इट। एट द एंड ऑफ द डे, जैसा किशोर बियानी बोले थे, जिन्होंने 2006 में पहला बिग बाजार खोला था कोलकाता में, और फिर बाद में इट्स हिस्ट्री, जो दिखता है वो बिकता है। ये थोड़ा बहुत तो रहेगा, ये बिल्कुल जीरो नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ टूल्स, अगर आप नहीं भी दिखा पा रहे हो, वैल्यूबल चीज है आपके पास, तो उसको आप दिखाने वाला आप बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। यस प्लीज, वन क्वेश्चन। बच्चे आगे आओ बेटा, आगे आ जाओ। इस बीच मैडम के क्वेश्चन को मैं आंसर करता हूँ अलग तरीके से। एक बार एक कंपटीशन में था कि जो कम शब्द में बोलेगा कि रूम में अंदर है, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो एक हिंदी वाला गया, उसने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक। फिर इंग्लिश वाला बोला मे आई कम इन। उधर से भोजपुरी वाला आया, बोला ढूकी नौकरी मिल गई। यस प्लीज। यस सर, आप जब AR1 आप अपना नाम बताओ, किस स्कूल से और क्या सब्जेक्ट? ओके, चलो ठीक है। सर, आप जब AR1 आए होंगे तो आपको लाइक बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत खुशी होगी। तो आप मतलब उस टाइम सेटिस्फाइड थे क्या कि यहाँ पर आ गया, इससे और कुछ नहीं? वो सेटिस्फैक्शन कब आता है कि हमेशा रहते हैं कि और अच्छा कर सकता हो? AR1 आके आ जाएगा क्या वो खुशी? काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक ये किसी ने अभी एक बोला था कि वी शुड नॉट लीड ए सक्सेसफुल लाइफ बट ए पर्पसफुल लाइफ, ठीक है। तो सक्सेसफुल मैं तब फील कर रहा था, बट तब मुझे पूरी तरह से पर्पस नहीं मालूम था, तो पूरी तरह से मैं खुश नहीं था। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि मेरा पर्पस है, लेट्स से मेरा पर्पस है करियर डेवलपमेंट, या फिर मेरा पर्पस है टू प्रोवाइड, टू ब्रिंग, लेट्स से ब्रिंग टैलेंट एंड जॉब टुगेदर, राइट। उसमें क्या है पर्सनल, राइट। सो जब पर्पस पता चलता है, मेरा पर्पस है टू बी केयर गिवर टू माई पेरेंट, राइट। सो उसके पीछे क्या है और कैसे कर सकते हैं, तो पर्पसफुल लाइफ के टुवर्ड्स में जब
क्लैरिटी आ जाती है तो तब आपको रियल हैप्पीनेस मिलती है। ये एक सीढ़ी है, ट्रस्ट मी। ये 12th में बोले जेई 1 हो जाएगा तो जेई हो जाएगा तो मजा करेंगे, तो अगले अगले के चलते बोला कि अब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, बाहर एम्प्टी नेस्ट हो जाएगा, तब खूब काम करेंगे, तब ज़्यादा मजा करेंगे। फिर रिटायर हो गए तो फिर कुछ हुआ, फिर फाइनली बिना जिए हम बोला कि अब तो ऑलमोस्ट मरने वाले हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा बोल रहे थे बहुत लोग कि प्रेजेंट में थोड़ा जो है वो पर्याप्त है। ये समझने में बहुत साल लगते हैं, मुझे 10 को लग गए पर थोड़ा आप इसको आत्मसात कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स ए कंटिन्यूस जर्नी। और जो जेई 1 है या जेई 10 है या जेई 100 है, वो नहीं है। आप क्या हो, आप अपने आप को ढूंढो। तो थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। सर आई वांट टू आस्क दैट सर, बेटा नाम बता दो, स्कूल बता दो। सर मेरा नाम अंशुमन रंजन है और मैं आचार्यकुलम से हूँ। सर मुझे पूछना है कि आपने AIR 1 अचीव किया, तो क्या आपने उसके लिए 24 में से 25 घंटा पढ़ा है? सर एक और क्वेश्चन है सर, कंसिस्टेंसी मैटर करता है या फिर इंटेंसिटी? सर पढ़ाई का ड्यूरेशन या फिर क्या मैटर क्या करता है? श्योर। आई थिंक 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, किसी ने इसको मेंशन भी किया था कुछ दिन पहले, कुछ लाइक स्पीचेस में। तुम बैठ सकते हो। सो क्वालिटी मैटर्स मच मोर देन क्वांटिटी। इंटेंशनल, और क्या होता है ना कि जैसे मैं अपने बेटे के स्कूल में गया और देखा कि बच्चे लोग खेल रहे हैं, बहुत रैंडम तरीके से खेल रहे थे। तो मैंने क्या किया, जब एक गोल पोस्ट बना दिया इस तरफ और उस तरफ, तब वो कोऑर्डिनेट करके खेल रहे हैं तो थोड़ा सीख रहे थे। तो होता है ना कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग फिजिक्स में होता है ना, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बताएंगे नहीं, आप हाथ खड़ा करेंगे और एक किसी को मैं बोलूंगा जिसको आता है। ओके, ठीक से खड़ा कीजिए, एकदम ठीक से। आधा में समझ में नहीं आता है, पूरा पूरा कर सकते हैं। ओके, आई थिंक उस रो में मैन के बगल में, हाँ वो आप माइक पहुंचा सकते हैं। So distance is the total path covered by something, and displacement is the shortest path. ओके, और कौन कौन बोले हैं, बोलना चाहेंगे? और ज़्यादा हाथ थे। हाँ ठीक है, तुम बता सकते हो, माइक यहाँ पहुँचा दीजिए। Sir, distance is the total path covered and displacement is the shortest path between 2 points. ओके, मैं थोड़ा बताता हूँ। सो लेट्स से मैं एक पॉइंट पर हूँ, मैं नॉर्थ किया 100 मीटर्स, फिर 100 मीटर्स, 100 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 300 मीटर्स, बट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट एक्चुअली वही है मे बी। ठीक है, तुम लोग सही बोल रहे हो यार, मैं चलो तो जो डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ 100 है, जबकि डिस्टेंस, तो मेरा ये कहने का मतलब एफर्ट जो है इट शुड बी टुवर्ड्स सम गोल, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और समहाउ यू नीड टू, मैं बोलना चाहूँगा कि एक पिरामिड है जिसमें सबसे पहला है फंडामेंटल्स, कि तुम अपने सभी विषयों के मूलभूत सिद्धांत को आत्मसात करो। इंटरनलाइज, एसिमिलेट द फंडामेंटल्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होना चाहिए, उस पर अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए और टेक्निक्स बनाना चाहिए, और इसको रिपीट करो। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस फंडामेंटल्स को समझने के लिए करना चाहिए। पर आजकल क्या होता है, हम लोग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस में ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये थोड़ा पिरामिड उल्टा हो गया है। तो टेक्निक्स और प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहा है, फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन नहीं भी आपको आप देखे हैं, पर फंडामेंटल्स आपको मालूम है, तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाता है।
और somehow मेरी उस वक्त आदत थी कि मैं 10 बजे तक सो जाता था। तो मेरा थोड़ा हैप्पी गो लकी लाइफ था थोड़ा बहुत, राइट, पूरी तरह से नहीं, स्ट्रेस वगैरह थे काफ़ी, राइट, पर एटलीस्ट ये था कि मैं रात को आराम से नींद आ जाती थी, और 10 बजे हमेशा सो जाता था, सुबह 4 या 5 या 6 तक जगता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी क्या है कि आप लोग के पास हमारे पास बुक्स कम थे। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होगा फिल्टर करना है आपको कि टेलीग्राम से पीडीएफ है या पीडीएफ है, इतने सारे बुक्स हैं, कोचिंग से क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस है, फिल्टर कैसे करें, कौन करना है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए थोड़ी कम थी। पर हैविंग सेड दैट 10th के बाद 11th में जब आप जाते हो तो 10th तक जो है आप बेबी पूल में खेल रहे हो, अचानक से आप सीधे समुद्र में चले जाते हो, तो अथाह सिलेबस हो जाता है। तो शुरू में वो सब होगा, वो नेचुरल है। तो वहाँ पर मेरे एक मेंटर थे, एक अंकल, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया था। और उस तरह से आजकल तो बहुत तरीका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने आंखों का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो मैं हर दिन अपने छोटे भाई के साथ टेबल टेनिस खेलता था, एग्जाम से एक दिन पहले भी, ठीक है। तो सब लोग ताली बजाओ कि खेलना चाहिए, ठीक है। अमोल सर यही बात बोले थे जी, खेलना चाहिए। और मैं एग्जाम से एक दिन पहले भी 10 बजे सोया, सेम टाइम में। लेकिन उसका ये भी मतलब था कि मेरी तैयारी साल भर हुई है, ठीक है, अगर नहीं होगी तो नींद भी नहीं आएगी, राइट। पर ऐसा नहीं था कि मैं पूरा कॉन्फिडेंटली जाता था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी 24 घंटे थे। पर मैं समहाउ मैं बोला थोड़ा हैप्पी गो लकी था, तो मेरा थोड़ा एक्सपेक्टेशन अपने आप कम हो गया था जब मैं 7 से 8 में गया था। समहाउ क्या हुआ कि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था बहुत ज़्यादा अच्छा करने का। वो मुझे लगता है पता नहीं, जैसे पापा लगाए हुए थे पर हम ध्यान नहीं देते थे, राइट। तो और समहाउ हैप्पी गो लकी, मतलब मैं आते गया, अच्छा रैंक लाते गया, राइट। फिर बाद में फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, राइट। सो फिर उससे उभरा ये हो, राइट, क्योंकि फिर समझ में सक्सेस से ज़्यादा जरूरी पर्पसफुल लिविंग है। फिर हमने समझा, विक्टर फ्रैंकल को पढ़ा, फिर और लोग को पढ़ा। तो यहाँ तो दैट वे काफ़ी अच्छी अवेयरनेस है। और जो लोग रांची में हैं, यू नो यहाँ पे रिन पास है, देयर आर साइकोलॉजिस्ट, नहीं तो आप RCI करके है, उसमें एक्सेल शीट लेकर ऑनलाइन बात कर सकते हो। बोकारो में BGS में तो छुप के जाना पड़ता था किसी से, राइट। यहाँ पर जूम कॉल में आप बात कर सकते हो सर्टिफाइड थेरेपिस्ट से, राइट। और देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ बायस स्टिल, सो देयर इज नो नीड to come out and talk about it. Rather, work hard silently, take such help silently, let the success speak for you, let the purposeful feeling, the bliss on your face speak for you. मेरे को सब लोग MS धोनी बोलते थे, क्योंकि मतलब उस वक्त MS धोनी नहीं था, पर मेरे को कैप्टन कूल बोलते थे, क्योंकि मैं एग्जाम वगैरह में बिल्कुल कूल रहता था। फिर बाद में वो लोग बोले यार तुम बहुत कूल थे, अब कैसे तुम स्ट्रगल कर रहे हो। हम बोले सबका समय आता है, उस वक्त मेरा सही समय था। सो व्हाट आई मीन टू से कि ट्राई टू एलिवेट योरसेल्फ। सबके पास 24 ही घंटे हैं, हाउ यू मेक यूज ऑफ इट एंड हाउ यू लीड ए फिजिकली एंड मेंटली वेल लाइफ, दैट मैटर्स। आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू। यस, वी हैव वन क्वेश्चन देयर सर। अभी लोग जमे हैं। 10 से जो 11th का अमित जी, राहुल जी रेडी हैं, रिजल्ट तैयार है। 10 से जो 11th जाता है लेवल, उसको मैं एक शब्द में कहता हूँ, समंदर सा सिलेबस है। सिलेबस कैसा है? समंदर सा सिलेबस है, बाल्टी भर पढ़ते हैं। समंदर सा सिलेबस है, बाल्टी भर पढ़ते हैं, जग भर याद रहता है। समंदर सा सिलेबस है, बाल्टी भर पढ़ते हैं, जग भर याद रहता है, ग्लास भर लिखते हैं और नंबर आता है चुल्लू भर, इसमें डूबकर मर भी नहीं सकते। जी, प्रणाम सर, मेरा नाम आदित्य कश्यप है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल चास बोकारो का छात्र हूँ। तो मैं पटना का रहने वाला हूँ बेसिकली, पर मेरा एडमिशन पापा ने बोकारो में करवाया था। जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं, थोड़ा सा डिसिप्लिनरी इशू बोले या फिर आइसोलेशन के लिए, मतलब अलग शांत जगह पे भेजने। सही है। तो मतलब जब मैं बोकारो आया था तो आज मुझे देख के आपको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने आपका नाम बहुत नहीं बहुत ज्यादा बार सुना था। अभी भी बस आपके नाम से इंस्पिरेशन दिया जाता है ये बोल के कि तुमको उनके जैसा बनना है।
सर तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग का यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम रहता होगा, हमको होप्स हो कि हम अकेले नहीं हैं। जब पढ़ने बैठते हैं तो मतलब कंसंट्रेशन रहता है स्टार्टिंग के टाइम में, बट फिर दिमाग कहीं और जाने लगता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाने लगता है और फिर वो रुकता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करना पड़ता था क्या? हाँ, सो बेसिकली इसमें क्या है ना कि सबसे पहले आपको अपनी आँख का ध्यान रखना है और दिमाग का ध्यान रखना है। ये तो दिमाग से रिलेटेड है। तो आँख का ध्यान रखने में क्या है कि आपको समझना होगा कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके आँख से बस 1.5 फीट पर बुक है। तो एवरी 20 मिनट्स जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपको ब्रेक ये लेना है कि आपको करीब 30 मीटर्स दूर की चीज़ देखनी है। इसका ये मतलब नहीं है बुक पढ़ रहे हैं तो फिर ब्रेक आप क्या ले रहे हैं, मतलब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और ब्रेक आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक में जो मुझे पापा की ओर से और एक आई खराब होने का गिफ्ट मिला, आई लव बॉलीवुड सॉन्ग्स। ठीक है, तो गाना सुनिए, वीडियो मत देखिए, ये फिर आएंगे। तो दैट इज नंबर 1। और मोबाइल तो बिल्कुल नहीं, वीडियो तो एटलीस्ट थोड़ा दूर है, मोबाइल ठीक है। इंस्टाग्राम के लिए एक अलग से टाइम मांग लीजिए बाद में, राइट। तो एवरी 20 मिनट्स वो नहीं करना चाहिए। अब दूसरा है कि हम बाह्य चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि लाइक्स 100 से 500 हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर पढ़ाई खराब हो गई, राइट। तो थोड़ा वो माइंडफुलनेस और वो करना पड़ेगा। और तीसरा है कि हैव इंटेंशन टू सक्सीड, हैव लव फॉर द सब्जेक्ट। जब मैं पढ़ता था रेसनी खलीडे से, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड ए फ्लो स्टेट। कोई भी चीज़ अच्छे से करना है तो यू हैव टू रीच इन फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में यू आर लविंग द सब्जेक्ट, आई लव फिजिक्स, एंड फ्लो स्टेट में जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज़्यादा अच्छी ग्रास्प होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो जिन्होंने फ्लो स्टेट नाम दिया है, वो जो साइकोलॉजिस्ट है, ही जस्ट डाइड 2 years ago आई थिंक। पर उसमें आने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, राइट। इट्स नॉट जस्ट ए सिंपल थिंग। तो मैं बोला ना, थोड़ा हैप्पी गो लकी था। तो आई यूज्ड टू अचीव फ्लो स्टेट समहाउ। 1 घंटे तक लगातार पढ़ता था, फिर आई यूज्ड टू क्लोज इट, आई यूज्ड टू रिमाइंड माई सेल्फ इन द माइंड। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जा रहा है, एक चीज़ कर सकता, एक मैं करता था, वो राइट करना शुरू कर देता था। तो राइट करने से थोड़ा फ़ायदा होता था कि जो कोऑर्डिनेशन है, तो द एंटायर फैकल्टी ऑफ माई माइंड इज बिजी विद ऑल ऑफ दैट, राइट। विद फिर दूसरा है कि थोड़ा मैं विजुलाइज करता था कॉन्सेप्ट को। पुली है, ऊपर नीचे जा रहा है, फिर एनर्जी, मोशन वगैरह, जो कि अब थोड़ा ज़्यादा आसान है क्योंकि अब तुम वीडियो देख सकते हो। पर वहाँ टू मेनी में फंस मत जाना। यू नीड टू गेट एडवाइस, यू नो। फॉर एग्जाम्पल विकास जी इज वेरी गुड यू नो मेंटर, राइट, कि इस टाइप का वो बता सकते हैं। और तुम लोग आपस में भी आसपास में मिलेगा, वीडियो वगैरह है, सीनियर से पूछ सकते हो। आपस में पीयर्स में हेल्दी कंपटीशन रखो, आपस में शेयर बहुत करो, तो उस तरह से करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब हम अनाउंसमेंट करेंगे। सर जब ने कहा कि आई लव फिजिक्स सर प्लीज, तो एक बच्चा से मिला था, बोला सर आई लव फिजिक्स बट फिजिक्स डज नॉट लव। मैं फिजिक्स से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे प्यार ही नहीं करता है। ठीक है, इसके आंसर्स बहुत क्वेश्चंस हैं। किसी एक दिन अलग सर को देख के लगा एक दिन बोकारो में टाउन हॉल कर देते हैं, खुला सवाल और रांची में नए कॉन्सेप्ट। राहुल जी, सारा समय हम लोग इसलिए ले रहे थे कि रिजल्ट आप बना लीजिए, है ना। तो पहले पार्टिसिपेशन जो अचीवमेंट है सबके लिए अनाउंस करते हैं, फिर हम लोग 1 2 3 करेंगे। सबसे पहले मैं श्री प्रसून झा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आप यहाँ आए और अपने प्रेरक विचारों से आपने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया, और इवन आपने काफ़ी सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, इवन फिजिक्स के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स भी बताए। धन्यवाद सर। अब मैं सिद्धार्थ सर को साइकोग्राफिक सोसाइटी से माइक पर आमंत्रित करता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मैं जिस तरीके से आप लोग स्कूल्स अल्फाबेटिकली आए थे और द सर्टिफिकेट, मैं नेम अनाउंस करूंगा स्कूल के। इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट एक साथ आएंगे। तो मचाल कुलम,
फोटो नीचे से अच्छा कैसे दोनों स्टूडेंट का नाम है सलोनी कुमारी अनीता इंटरव्यू Matriculum Ansuman Saswat कहानियाँ Saswat Jharkhand from Anita Intermediate College Saloni Kingu Kumari is from Kolkata Public School Suniti Kumari Akriti Sinha from Cambrian Public School, Kakea, Ashna Rahman. From this side. Soumya Raj, Chinmaya Vidyalay, Bokaro. Raj Aryan. And Agrima Singh, same School of Excellence, Sarah Tabrej. From the Bariyatu, Devishi and Riddhi. I think उससे From Devi Hazaribagh, Vaibhavi Srivastava and Srishti Sharma. From Devi here. सर्टिफिकेट चेंज होगा तो नहीं फोटो खिंचाना She was late. From Devi Kapil Dev.
From DAV Kapil Dev, DAV Kapil Dev. She is from DAV Kapil Dev. DAV Kapil Dev, Abhishek, please come here. DAV Nirja Sahib. DAV Public School Sector 4. Jharkhand Public School, Punjab. Delhi Public School, Bokaro. Delhi Public School, Ranchi. Delhi Public School, Chas, Bokaro. Jawahar Vidya Mandir, Shamli. Kerala School. Lady K.C. Roy Memorial Public School. Loreto Convent. Yeah. Loreto Convent. Manan Vidya Public School. Sharda Global Public School. South Point, Mundu. This side. SRDAV, Indore. So you have the same public school. St. Xavier School, Surendra,
and Vidya Vikas Public School. बच्चे आओ।